अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन गेट ऑल द पॉइंट्स क्लियरली अंडरस्टूड। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी, अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस and what is the need of knowing about human anatomy or knowing about human structure or organizations, understanding why we need to study understanding. So the main thing is that it is basically made for identification and description of human organization, understanding that means the location of structures, size, shape, morphology, functioning, and all that thing, and what is the relationship of organs among themselves, what is the relationship of one organ related to another organ, understanding. So that we need to know about this human anatomy, and this is very much important in the field of nursing, understanding. अगर हम नर्सिंग की बात करेंगे, जो नर्सिंग कोर्सेज होता है उसमें जो जीएनएम और बीएससी कोर्स होता है, तो उनमें से फर्स्ट ईयर में सबसे मेन जो टॉपिक होता है, आई मीन सबसे मेन जो सब्जेक्ट होता है वो है तो है एनाटॉमी। इन एनाटॉमी के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन्स, कितने ऑर्गन सिस्टम है, हमारी बॉडी किस चीज की बनी हुई है, अंडरस्टैंडिंग, और हमारा जो बॉडी है इसके अंदर जो भी फंक्शन होता है वो कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है, मैकेनिज्म फंक्शन या मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी स्ट्रक्चर्स। ओके, सो दिस इज अ लिटिल इंट्रो अबाउट द एनाटॉमी, अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द definitions. Okay, definitions of anatomy and physiology. So before we know about the definition of anatomy and physiology, okay, we must know that what is the literal meaning of this word anatomy, understanding. So this literal word is mainly, we can say that the anatomy word, it has been derived from a Greek word, understanding, Greek word. What is that Greek word? That is anatomian, or we can also say anatome, which means cutting up or cutting off. ओके, तो मीनिंग जो इसका होता है वो सेम ही होता है, अंडरस्टैंडिंग। So what is the literal meaning of this anatomy is nothing but cutting up or cutting off, understanding. So it means that when we are going to know about the human structures, structural organization, understanding, we are going to study about the dissectional anatomy, sectional anatomy, and all that thing which are related to this anatomy. So that is mainly concerned with the human anatomy, understanding. Now let's see the next thing, that is the definition of the anatomy and physiology, understanding. So what is anatomy and what is physiology? So anatomy and physiology, they are mainly the branches of science, ठीक है ना, we can discuss them separately. So anatomy is the branch of science that deals us about structure of human body, understanding their location, their shape, their morphology, their structure, and their relationship with each other, understanding. Mainly we can say that this anatomy is nothing but is the branch of morphology. Morphology, what is morphology? Morphology is when we are going to know about when we are going to study about human science, understanding, yeah, human biology, understanding. So we can say that human anatomy is nothing but it is knowing about, or we can say it is a study of human structure, their location, their shape, their size, and their this one we can say relationship, understanding. So next one is the physiology. So it means that if we need to talk about the anatomy, that is nothing but then when we are going to talk about the location, size, shape, relationship, ठीक है ना, relationship of body organs, understanding.
So that is anatomy. And if we will talk about the physiology, अगर हम physiology की बात करेंगे ना, तो physiology की बात हम कैसे करेंगे? So we can say that it is also a branch of science that deals us how does these structures function. The function of these structures, that is known as physiology. Okay, physiology is mainly a word which means functioning. Understanding how do these structures function, that is the physiology. So we can say functioning. Understanding, simply we can say functioning or working, understanding or actioning. ठीक है ना? Functioning of body structures, that is it. Understanding. So for example, if we will take an example of human heart, okay, अगर हम ह्यूमन हार्ट के एग्जांपल लेंगे, अगर हम इसका एनाटॉमी के बारे में बात करें, we can say what is the location of heart, what is the size of heart, what is the shape of heart, and what is the relationship of heart with other organs. Understanding. And if we are going to talk about the functioning, we can say heart is a muscular organ, hollow muscular organ. Its main function is to pump the blood, ठीक है ना, as it has to supply the blood to the entire body in order to maintain the equilibrium state of the body, or we can say in order to maintain the homeostasis. Okay, so that is all about the anatomy and physiology. Okay, now coming to the next topic, that is branches of anatomy. Understanding. सबसे पहले जो है इसके बाद जो आता है वो है branches of anatomy. Okay, we should know about the branches of anatomy. Understanding. So branches of anatomy. Okay, so there are mainly 4 special branches of anatomy, okay, which we will be discussing. Understanding. So the first one is gross anatomy. Okay, first one is gross anatomy. This gross anatomy, it is also known as cadaveric anatomy. जो gross anatomy होती है इसको हम और एक नाम बोलते हैं cadaveric anatomy. क्या बोलते हैं? Cadaveric anatomy. या हम उसको और एक नाम बोल सकते हैं macroscopic anatomy. So we can also say this gross anatomy is known as cadaveric or macroscopic anatomy. Okay. So what does that mean? It means that when we are relating or when we are dealing with the large structures of human body, जब हम हमारे बॉडी के बारे में बात करते हैं तो जो बॉडी के लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, या हम बोलते हैं कैडावेरिक एनाटॉमी, या हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. फॉर एग्जांपल अगर हम क्या बोलते हैं इसको चेस्ट या थोरेसिक कैविटी की बात करते हैं, अगर हम हेड की बात करेंगे, अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है ना. सो लाइकवाइज ओनली व्हेन वी आर डीलिंग विद द लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, दैट इज नोन एज ग्रॉस एनाटॉमी. ओके, सो दिस ग्रॉस एनाटॉमी इज मेनली classified into further 3 types. Okay, main 3 types. The first one is regional, second one is systemic, and third one is surface. Okay, so regional, systemic and surface. What is this regional anatomy? Regional anatomy is nothing but when we are dealing with the structures of one side of the body, for example abdomen or legs. Understanding. For example head and thoracic cavity. Understanding. So that is known as regional anatomy. Understanding. So that is regional. Next one is the systemic. What is systemic anatomy? When we are getting to know about the different type of systems in our body. Mainly if we can talk about the systems of body, mainly there are 11 different types of systems present in our body. For example cardiovascular system, yeah, we can see circulatory system, central nervous system, muscular system, skeletal system, lymphatic system, understand, excretory system. So these are all the different kinds of structure which are body systems which are present in our body. Understanding. So next one is the surface anatomy. What is surface anatomy? Surface anatomy is nothing but when we are going to study about the internal structures of our body. जब हम internal structures की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं surface anatomy. Okay, so this is all about the gross anatomy or cadaveric anatomy. Understanding. Now number 2 is microscopic anatomy. Microscopic anatomy. Understanding.
So in this microscopic anatomy means that when we are unable to find out the things or the body structures, yeah, when we are unable to study about the body structures with our naked eyes, so then we can use the microscope, we can use some instruments through which we can easily identify and we can easily organize the structures which are located in our body. Mainly we can, this microscopic anatomy, it is further classified into two types. So first one is cytology and second one is histology. So cytology is cell study and histology is tissue study. Understanding? So we have to get to know about that, what is cell, what is the structure of cell, what are the cell organelles, ठीक है ना, सेल कैसे बनता है, सेल किस चीज की मेनली बनी हुई होती है। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा वो ये है कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम और एक नाम से पुकारते हैं या और एक नाम से रेफर करते हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर एनाटॉमी। अंडरस्टैंडिंग, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मींस टिश्यू स्टडी, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में मेनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है ना, 4 टाइप का टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर। सो वो क्या क्या होता है, आई होप यू आल्सो नो, ओके। सो वो क्या क्या होता है, एक होता है epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So epithelial, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Understanding? So these are the different types of tissues which are present. So इसको हमें क्यों पढ़ना है, इसको हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हम देख सके कि कौन से ऑर्गन में कौन कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, उसका क्या शेप होता है, उसका क्या मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो ये सब हमको इंक्लूड करना है। अंडरस्टैंडिंग? नाउ नंबर 3 इज developmental anatomy. Understanding? Developmental anatomy, this is also very important, okay. Developmental anatomy. So in this developmental anatomy mainly we are going to talk about the embryology, okay. So we can say the stage of development, we can say the series of developments which occur in the mother's womb from fertilization to the end result, we can say to the maturity, that is known as embryology. Understanding? That is known as developmental anatomy. यानी जो मदरस वोम होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जितना भी चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है, फंक्शनल चेंज होता है, ह्यूमन बॉडी में क्रिएट होता है, बनता है, जो भी होता है, तो उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अंडरस्टैंडिंग? सो वी हैव टू गेट टू नो अबाउट द what is embryology, ठीक है ना, what are the stages of embryology, ठीक है ना। So we can also get to know about that how a developed how a zygote is this one converted into the embryo, how the embryo is then lastly converted or divided, and what are all the structures and what are all the series of events, ठीक है ना, which takes to form a fully developed human being, yeah, we can say holistic development of human being. Understanding? In the mother's womb, that is all about knowing about the developmental anatomy, okay. Now last one is fourth one is last one, that is specialized anatomy. Okay. So under this specialized anatomy there are mainly pathological or clinical. The second one is comparative anatomy. Third one is physical anthropology. Fourth one is radiographic. Fifth one is genetics. And sixth one is experimental anatomy, okay. If you want to take down these notes, you can take screenshot even though, okay. So specialized anatomy talks about some different, you can say definite
understanding definite structures and definite structural concepts of human body. Okay, understanding. So under that there are mainly 6 types. So pathological or clinical, comparative anatomy, physical anthropology, then radiological, and then radiographic and genetic, and last one is experimental. So what is this pathological? Pathological is what is the effect of disease. What is the effect of disease? ठीक है ना? What is the effect of disease on our structures? जो स्ट्रक्चर होता है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उन पर क्या इफेक्ट होता है डिजीज का, और फंक्शनिंग पर क्या इफेक्ट होता है, दैट इज नोन एज पैथोलॉजिकल क्लिनिकल anatomy. Okay, mainly we can also say when we are reading or when we are knowing about the applied anatomy and applied physiology of the particular structures. Next one is the comparative anatomy. It is the making a comparison, ठीक है ना, from one organism of one species to the another organism of another species. When we are going to make the comparative study, यानी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि अगर हम इस, और फॉर एग्जांपल अगर यह हमारे बॉडी के अंदर ये ऑर्गन होता है, तो दूसरे जो स्पीशीज का दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन सिस्टम होता है, कौन सा फंक्शन होता है, कैसे फंक्शन करता है, तो वो सब चीज, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर हम हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है, जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है, जो लंग्स में मेनली होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, तो हम में कैसे होता है उसका मैकेनिज्म, और जो एनिमल्स होता है उनमें कैसा होता है, और जो बाकी दूसरे स्पीशीज होते हैं तो उनके अंदर कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, वो हम पढ़ते हैं किसमें, मेनली कंपैरेटिव एनाटॉमी. नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. Physical anthropology is related to the diversity of living things, understanding and then evolution of man, and also the what we can say some theories which are related to this one evolution, understanding. So how the man has arrived to this universe, how the man has came to existence, यानी इंसान इस दुनिया में कैसे आया, अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में, जिसमें हम बोलते हैं पढ़ते हैं डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना, some laws and some theories we are going, theoretical aspects we are going to study in the field of physical anthropology, understanding. And next one is the radiographic is when we are studying about the internal structures of body through x-rays, CT scan, MRI, ultrasonography, in order to know the conditions of the internal organs, that is known as radiographic. And next one is the genetic, when we are going to study about the genes and hereditary factors. Okay, in that there is the content will be there, for example chromosomes, understand DNA, how DNA is formed, DNA कैसे बनता है, DNA fingerprinting, DNA formation, ठीक है ना, how the cell meiosis and mitosis occurs, understanding in both, we can say sperm cells in both male gametes, in both female gametes, understanding. So that is what we need to learn and know about the genetic. And last one is the experimental anatomy. In this experimental anatomy is mainly the component of this all pathological, comparative, physical, radiographic, genetic. So in this we are going to do some researches, we are going to do some fundamental researches in order to come to the end result, understanding. In order to, we will have some discussions, we will make some discussions in order to get to the positive point, in order to talk about some organs, ठीक है ना, some systems of our body. So in order to do the fundamental researches, understanding, ठीक है, and also to know about the anatomy properly. Okay, what are all the aspects of anatomy, what are all the branches of anatomy. So this experimental anatomy talks about all the other branches of anatomy, understanding. I hope you understood the specialized anatomy, understanding. Now the last topic which I am going to discuss is and review of anatomy. I have discussed that definition and branches, and last one is the level of organization. Okay, levels of organization. Okay, so in this levels of organization there are mainly, you can say, chemical, second one is cell, tissue, then next one is, fourth one is organ, then fifth one is organ system, and then sixth one is, last one is individual. Okay,
जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला डेवलपमेंटल एनाटॉमी में, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल एनाटॉमी में ही ना हम एक्चुअली ये क्या है इस इनको डिस्कस करते हैं, इस चीज को डिफाइन करते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी में ही. ओके, सो व्हेन द बेबी इज ग्रोइंग और व्हेन द बेबी इज डेवलपिंग इन द मदर्स वomb, so these all the cycles okay occurs, ये all the phases of development these occurs. Okay, first of all what will be happening, there is the chemical. What is chemical? Mainly we can say when there is a combination of atoms. Okay, combinations of atoms, जब atoms combine होता है, when there is a combination of atoms, okay, so it forms, so they will form cell. Understanding? They will form cell. Understanding? And the next one is cell. What is cell? Cell is nothing but it is basic structural and fundamental unit of life. Understanding? So we can say that the cell is nothing but it is the combination of molecules. Combination of molecules. So when all the molecules, or we can say molecules in atomic molecules, they combine together and they will form cell. Understanding? So next one is tissue. Okay, what is tissue? When ठीक है ना, more than two cells, when cells are grouped together, understanding, and they will have the definite shape, size, and they will be having the similar functioning. Understanding? When they are grouped together, they will make one structure that is known as tissue. Understanding? So we can say group of cells. Group of cells unite, ठीक है ना, unite together to form tissue. Understanding? सो mainly जो मैंने आपको बोला है कि हमारी बॉडी के अंदर 4 किस्म का टिश्यू होता है. जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और वी कैन से नर्वस टिश्यू. अंडरस्टैंडिंग? ये सब चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए. ओके, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी. अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट वन इज द ऑर्गन. ऑर्गन क्या होता है? when more than one tissue, okay, they combine together, they will form the organ. Okay ना? So we can say when more than one tissue combine. Okay, so more than one tissue combine, they will form one structure that is known as organ. Then next one is the organ system. Organ system. So organ system क्या होता है? When more than two organs, yeah, when we can say when more than one organ they unite or they combine together, so we can say they will make a one conjugated structure that is known as system. Understanding? So अगर हम organ की बात करेंगे, अगर हम mainly organ की बात करेंगे तो हम बोलेंगे for example lungs. अगर हम organs में बोलेंगे तो हम बोलेंगे lungs. और अगर हम फिर ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्योंकि जो लंग्स होता है वो सिर्फ एक ही ऑर्गन है. तो लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर तो लंग्स ही नहीं होते हैं, उसके अंदर ब्रोंकियल्स होता है, ठीक है ना, ब्रोंकस होता है, ट्रैकिया होता है, लैरिंक्स होता है, फेरिंक्स होता है, नोज होता है, नॉस्ट्रल्स होता है, ठीक है ना, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, लैरिंजियोफेरिंक्स, ये सब होता है. ठीक है ना, जो मेनली हेल्प करता है रेस्पिरेशन में. तो ये सब चीज ना combination of this organ is known as organ system. So we can say respiratory system. And last one is the individual. Individual क्या होता है? When we can say individual, हम इसको को बोल सकते हैं कि जिसके अंदर complete development of 11 structures, sorry 11 organ systems. In 11 organ systems means कि जैसे मैंने पहले बोला, for example respiratory system, this is organ system. Okay, so we can say like a respiratory system, cardiovascular system, ठीक है ना, muscular system, skeletal system, central nervous system, ठीक है ना, endocrine system, ठीक है ना, reproductive system, gastrointestinal system. So when all these 11 systems, okay, ठीक है ना, we can say a human body, it constitutes about 11 total systems, okay, which makes one organism or which makes one individual. Okay, so this is the fullest development of, we can say this is from initiation to final stage. Okay, so initiation में क्या होता है? पहले केमिकल होता है. तो केमिकल कैसे बनता है? जब एटम्स होते हैं, जब एटम्स आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल. उसके बाद क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं सेल. तो सेल के अंदर फिर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो आपको पता ही होगा. सेल के अंदर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है ना, स्मूथ, रफ, nucleus, Golgi apparatus, mitochondria, lysosomes, ribosomes, microfilaments, plasma membrane. तो ये सब चीज होता है सेल के अंदर. अंडरस्टैंडिंग? जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. अंडरस्टैंडिंग? एंड देन उसके बाद टिश्यू होता है. टिश्यू क्या होता है? व्हेन देयर आर ग्रुप cells are grouped together, okay, so they will be having the same shape, similar structure, so they will be forming the different kinds of
टिश्यूज। तो टिश्यूज का कैसे हो सकता है, एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल हम जानते हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, उसके बाद ऑर्गन होता है, ऑर्गन में जब एक से ज्यादा टिश्यू कंबाइन होता है तो वो बनाता है ऑर्गन। तो ऑर्गन सिस्टम हम किसको बोलते हैं, जब मोर देन वन ऑर्गन कंबाइन टुगेदर एंड दे विल फॉर्म वन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज organ system. And lastly, when there are a complete set of 11 systems are present in human being, that is the complete, or we can say fullest development of human being. Okay, so आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी। अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम एनाटॉमी क्यों पढ़ते हैं। ओके, सो व्हाई वी नीड टू, व्हाट इज द मेन पर्पस, सो इट इन ऑर्डर टू गेट द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंडिंग, हम जो ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, या उनके ऊपर हम कुछ रिसर्च कर सके, डायग्नोज कर सके, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है ना, उनके दौरान हम जांच कर सके, ठीक है ना, वो किस चीज का बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एनाटॉमी का मकसद ये भी होता है कि हम जान सके कि ह्यूमन बीइंग कैसे बना है, ठीक है ना। ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमको जानना है अच्छे से, डीपली हमें इसमें जानना है, ठीक है ना। वो मैं आगे आपको जो आगे वीडियोस में अपलोड करूंगा या मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उनमें आपको आराम से एक्सप्लेनेशन के थ्रू में समझाऊंगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हमने मेनली डिस्कस किया है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी, ठीक है ना, फिजियोलॉजी एनाटॉमी, डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ओके, सो तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।